Yes, students, now we have to discuss some more questions of chapter number 2. Okay, so question number 26 is write the cellular content carried by pollen tube. How does the pollen tube gain its entry into the embryo sac? If you remember the structure of pollen tube, that this is the we can say vegetative cell. Inside vegetative cell there is generative cell, and two male nuclei are there, and that means they are into the we can say in the pollen tube, and pollen tube enter through the we can say ovule through micropyle region, and we know that there are synergid cells and the filiform apparatus are there, through which they enter into the you can say our embryo sac. Now next question is a pollen grain in angiosperm at time of dehiscence from an anther could be 2-celled or 3-celled. Explain how are the cells are placed within the pollen grain when shed at 2-cell stage. That means about 60% of angiosperm the pollen placed on the stigma at 2-cell stage. तो वो 2-cell stage में होगा, and that उसमें एक vegetative cell और generative cell होगी, and after that male nuclei, after we can say pollination, male nuclei divide further of male nuclei of generative cell divide further and will form 2 male nuclei. Okay. Question number 28. State one advantage and one disadvantage of cleistogamy. The advantage of cleistogamy is that there is no need of any type of pollinating agent, and disadvantage is that due to autogamy there is no variation in the seeds, or we can say for the embryo or the next generation. Question number 29. Name the product of fertilization that form the kernel of coconut. How does the kernel differ from coconut water? We know that kernel is the endosperm. If we talk about, we can say the coconut, then two type of endosperm are found there. One is with free nuclei or with fluid nuclear division, that form the watery endosperm, and other form the we can say cellular, that form the white kernel part. So this is the एंडोस्पर्म. तो डिफरेंस क्या हो गया, इसमें वाइट कर्नल होता है तो ये सेलुलर होता है, एंड दैट इज वी कैन से ओनली फ्री न्यूक्लियर we can say endosperm is there. Now come to question number 30. This post fertilization event in angiosperm like development of endosperm है, embryogeny है, seed and fruit formation are there. Question number 31. Mention the function of each of the following tassel of corn cob tapetum in microsporangia. We know that the tassel of these are stigma and style है, जो क्या करते हैं, एक्सपोज होते हैं एयर से टू वी कैन से ट्रैप द pollen grains, and tapetum we know that it provide nourishment to the developing pollen grain. Describe the development of endosperm after double fertilization in the angiosperm. Why does endosperm development precede then zygote? ये हमने पहले डिस्कस कर लिया. Draw vertical section of maize grain and label pericarp, scutellum, coleoptile and radicle. This you can see in the figure. We have discussed many times. Explain the function of each. We can say coleorhiza and jump. और coleorhiza, rhiza से R आपको ध्यान रखना है. That means we can say coleorhiza का R याद रखना है और coleoptile का P याद रखना है. तो P जो किसको कवर करेगा, प्ल्यूमेल को rhiza, रेडिकल पार्ट को कवर करता है. जंप और से पोलन ट्यूब एग्जिट होती है. डिफरेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच. Albuminous mean that mean with endosperm, non-albuminous without endosperm. तो we can give example of castor and maize in albuminous और non-albuminous में बाकी डाइकोट का जैसे P का दे सकते हैं. Okay. Mention the reason for difference in ploidy of zygote and primary endosperm nuclei. Very simple. We know that zygote किससे बनता है, eggs
एग न्यूक्लियस और एग सेल विद द मेल गैमेट। तो ये डिप्लॉइड होगा और एंडोस्पर्म किससे बनता है, सेंट्रल सेल दैट मीन पोलर न्यूक्लियाई एंड वन ए मेल गैमेट। तो ये क्या होगा, 3n होगा। तो दिस इज द pn एंड दिस इज द जाइगोट। तो ये इसमें डिफरेंस हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट, मेंशन द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्लॉइडी ऑफ जाइगोट। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, some angiosperm seeds are to be albuminous where some few others are said to have perisperm, explain each with the help of example। कुछ नहीं है, थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। पेरिस्पर्म दैट मीन्स कई बार क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो परसिस्ट कर जाता है, जैसे आई थिंक दो एग्जांपल हमने पेपर एंड बीट। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस आल्सो persistent, तो न्यूक्लियस उसके साथ ही विद द सीड। सो सच टाइप ऑफ सीड्स आर नोन एज वी कैन से विद पेरिस्पर्म। Okay, so albuminous that means with endosperm, non-albuminous. Double fertilization is reported in plant for both castor and groundnut. However, mature seed groundnut are non-albuminous and castor seed are albuminous. Simple सी बात है, जिसमें endosperm consume हो जाए that would become the non-albuminous, जिसमें endosperm persist रहे that is a albuminous. This is the only difference we can say. Okay. After that, question number 39, you are given castor and bean seed, which one of two would you select to observe the endosperm। देखो bean है that is non endospermic है और castor है that is endospermic, तो हम castor select करेंगे। The development of endosperm precedes that of embryo in plant justify बार बार वही चीज आ रही है। Okay, now mature seed of legume are non-albuminous, then it can be assumed that double fertilization does not occur in legumes। Explain your answer। ध्यान से पढ़ो दोबारा। Mature seeds of legumes are non-albuminous, then it can be assumed that double fertilization does not occur in legumes। इसका कोई मतलब नहीं है कि चाहे वो हो या ना हो। The simple thing is that if non-albuminous seed is there, तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, अदरवाइज वो उसमें परसिस्ट करता है, दैट्स ऑल। सो नो इट कैन नॉट बी assumed to because double fertilization does not take place but endosperm is consumed during the embryo development, उसके डेवलपमेंट के जरूरी है। सो डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो, सीधी सी बात है। फर्स्ट इज द दैट मीन इन डाइकोट एम्ब्रियो 2 कोटिलेडन है, मोनोकोटिलेडन में सिंगल है। तो डाइकोट में बात करें, रेडिकल प्लूमेल आर नॉट कवर्ड विद शीथ, जैसे दैट मीन्स दीज आर द here we can say this is the plumule and here is the radical, इसके बाहर कोई चीज नहीं है, but there is a radical is covered with coleorhiza and coleoptile with plumule। मैंने अभी बताया means like here there is the we can say plumule and there is the radical। so radical is covered by coleorhiza, r से radical याद रखना और कोलियोप्टाइल से प्लूमेल ऐसे याद रखना। नाउ व्हाट इज पेरिकार्प, मेंशन इज फंक्शन। उससे ऊपर देखो, ड्राई सेक्शनल व्यू ऑफ एन एप्पल एंड लेबल डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ओवरी इन इट, फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, देन व्हाई एप्पल टर्म रेफर टू एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं, बिकॉज द अदर पार्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इसमें कौन सा पार्ट करता है, थैलेमस। किसका एग्जांपल याद रखना है, स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड केश्यू का। ओके, जो काजू है हमारा। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज पेरिकार्प, मेंशन इज फंक्शन, functions। so peri means like see here the word peri means outer, carp means fruit, that means outer boundary or the covering of the fruit is pericarp। तो function क्या होगा, protecting covering है, तो that means wall of ovary develop होगी। ओके, तो प्रोटेक्ट करता है seed release maturity and help in seed dispersal। a non biology person is quite shocked to know that apple is false fruit, mango is true fruit
एंड बनाना इज सीडलेस फ्रूट। देखो तीनों में अलग अलग टर्म है। फॉल्स फ्रूट दैट मीन्स, पहले फर्स्ट कम टू दिस मैंगो, मैंगो ट्रू फ्रूट दैट मीन्स ओनली डेवलप फ्रॉम द ओवरी, तो वो ट्रू हो गया। अदर पार्ट देन ओवरी और इंक्लूडिंग ओवरी, तो वो फॉल्स हो गया। और पार्थिनोकार्पिक सीडलेस दैट मीन्स विदाउट fertilization, पार्थिनो मीन वर्जिन और वी कैन से विदाउट मैरिज, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। ओके, now come to question number 44. Why some seed referred to as apomictic seeds? Mention one advantage. Apomictic seed means apomix is that means seed without fertilization. Without fertilization seed meaning that is known as apomictic seed or apomixis. First name of process is apomixis. तो एडवांटेज क्या है? देयर इज किसी भी तरह की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? दैट मीन्स इसमें जेनेटिक म्यूटेशन या वेरिएशन नहीं आती है। और ये इसका एडवांटेज भी हो सकता है। दैट मीन्स वी कैन मेंटेन द इन एनी टू वेज बाय विच एपोमेटिक सीड गेट डेवलप्ड। एपोमेटिक सीड कैसे हम डेवलप कर सकते हैं या कैसे हो सकता है? जैसे डिप्लॉयड एग है, विदाउट रिडक्शन डिवीजन के डेवलप हो जाए, या सम सेल ऑफ न्यूसेलस है वो डायरेक्ट डेवलप हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के। दिस बोथ लाइंस आर एज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। If you squeeze a seed of orange, you might observe many embryos of different size. How it is possible? Explain. That means simple है। ऑरेंज में क्या होता है? So if you squeeze a seed of orange, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि we are talking about the polyembryonic, sometime formation of more than one embryo into the we can say in seed। तो कई बार न्यूसेलर सेल है वो डिवाइड कर जाती है एंड दे फॉर्म द डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रियो, डेवलप हो जाती है डायरेक्टली। बनाना इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वेयर ऑरेंज शो polyembryony. How are they different from each other? Already we have discussed. How are parthenocarpic fruit produced by some plants and apomictic seed by some other? Explain. So we can say parthenocarpic fruit that mean develop or develop into fruit without fertilization. Apomictic seed है, without fertilization seed बनता है। अब where when do farmer prefer partheno or apomictic seed? This is the very important thing है that suppose a farmer is buying hybrid seed and that hybrid seed cannot work for the next generation. So if there is a we can say apomictic seeds are there, that means the seed without fertilization, then the same character can retain to the next generation. Here the term is what is agamospermy? What is agamospermy? Another name of a apomictic NCERT, ये आपको ध्यान रखना है। Agamospermy different from parthenogenesis and parthenocarpy. Parthenogenesis एक term है that we will read in case of insect or bee and parthenocarpy fruit के केस में है agamospermy or we can say apomictic seeds. Okay, so in one more lecture we will discuss about the rest of questions.